Assalamu alaikum class 4. I hope you all are doing well. In this lecture, I'm going to explain you chapter number 3, Anansi and 5. This is the story of a strange creature, Anansi. Sometimes he was a man and often he takes the shape of a spider. इट मीन्स कि कभी एनएनसी ह्यूमन बीइंग होता था एंड कभी स्पाइडर की फॉर्म में होता था एंड ऐसा भी होता था कि एक ही टाइम पे वो ह्यूमन बीइंग और स्पाइडर बन सकता था यानी उसकी लोअर बॉडी एक स्पाइडर की होती थी एंड फेस इंसानों वाला. देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज अबाउट एनएनसी as he is an African folktale character. And in this story, Anansi was a trickster, which means a mischievous character. यानी जो लोगों को ट्रिक करता है और बेवकूफ़ बनाता है. Anansi was having a difficult time. He had no money to buy food for his family and they had nothing to eat. Anansi और उसकी फैमिली के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. Anansi कुछ अर्न भी नहीं करता था. One morning, Anansi was walking around the village and during the walk, he had a scowl on his face, which means he had an angry expression on his face. He was angry because he was hungry. And his stomach growled because of hunger. Growl means to make a low or harsh sound. When he was passing by a neighbor's house, he heard something. उसने कुछ ऐसा सुना जिससे वो बहुत खुश हो गया. He became happy. Okay, now let me tell you about Anansi's neighbor. She was an old, angry and unpleasant witch who became furious and irritated whenever anyone said her name. Because she hated her name. उसे अपना नाम बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि सारी लाइफ लोगों ने उसके नाम का बहुत मजाक उड़ाया. जब भी कोई उसका नाम सुनता था तो उसके नाम का मजाक बनाता था. Because her name was 5, F-I-V-E 5. उस विच का नाम एक नंबर पे रखा गया था इसलिए सब उसके नाम पे हंसते थे. Let's continue. Anansi was peeking through a gap in the witch's fence. Peek means to look, especially for a short time or while trying to avoid being seen. Anansi saw that the witch was stirring her big cooking pot and she was muttering and mumbling a spell. Muttering and mumbling कहते हैं बड़बड़ाने को. जो विच थी वो पॉट स्टर करते करते उस पर कोई मैजिक कर रही थी and that is why she was mumbling a spell on the pot. And while she was doing her magic, the smoke and sparks were coming out from the pot and they were blue and green. Anansi was very smart and he knew that she was cooking up some big magic. Suddenly, she started to walk around the pot. विच ने अपनी स्टिक ग्राउंड पे रखी एंड वो पॉट के इर्द गिर्द घूम रही थी एंड मैजिक कर रही थी. एनएनसी ये सब कुछ छुपके से देख रहा था एंड ही लिसन्ड केयरफुली टू व्हाट शी सेड. द विच सेड इन हर मैजिक, आई कर्स एनीवन हु सेज द वर्ड 5 टू डिसअपियर फॉरएवर. यानी उस विच ने ये मैजिक करा था कि जो भी 5 कहेगा यानी उसका नाम लेगा वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा. After listening this, Anansi rubbed his hands together and jumped around on his 8 hairy legs. He thought that this could make him some money or he could get some food for his family. So he smiled widely with his sharp teeth. Then Anansi made a plan. He rushed to the path that ran along the river bank between the village and the marketplace. Because that was the place where everyone who was going to the market would walk past. मार्केट और विलेज के बीच के रास्ते में एनएनसी को वो अपना प्लान जो है वो अप्लाई करना था क्योंकि उस रास्ते से सब मार्केट जाते थे एंड डिलीशियस फूड आइटम्स लेके आते थे लाइक यम्स, बीट्स, पल्सेस एंड ग्रेन्स वगैरह जो मार्केट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती थी ये सब चीज़ें. तो एनएनसी ने उस रास्ते पे जो है अपना प्लान अप्लाई करना था. Then Anansi set to work and piled up 5 mounds of earth near the path. But they looked just like he had planted 5 yams. Yam is a potato-like fruit and mounds of earth हम कहते हैं किसी छोटी सी हिल को जो हम sand and rocks यूज़ करके बनाते हैं. एनएनसी ने 5 mounds of earth लाइन से रख दिए थे लेकिन वो दिखने में इस तरह के दिख रहे थे जैसे कि उसने 5 yams प्लांट किए हों. And after placing the mounds, he sat down and waited. After some time, Anansi saw Mrs. Rabbit.
She carried a basket full of sweet potato pieces, and she was walking slowly because the basket was very heavy. Anansi stepped forward and smiled to see the heavy basket, as he knew that the basket was full of delicious food items. He offered Mrs. Rabbit to take rest for some time, and then he requested Mrs. Rabbit to count the yams which he has planted. यानी एनंसी ने बहाना बनाया एंड मिसेस रैबिट की हेल्प मांगी. उसने कहा कि मुझसे ये काउंट नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप क्या मेरे लिए ये यम प्लांट्स काउंट कर देंगी. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कितने प्लांट्स जो हैं वो लगाए हैं. मिसेस रैबिट वॉज काइंड एंड इनोसेंट, so she put down her basket and hopped along the row, counting 1, 2, 3, 4, and 5. When she counted number 5, in a flash and a bang, she disappeared forever because of that magical spell the witch had said while stirring the pot. यानी मिसेस रैबिट गायब हो गई थी उस विच के मैजिक की वजह से. And Anansi ate the whole basket of sweet potatoes in seconds. He licked his lips and sat down again to wait for someone else. अब वो किसी और का वेट कर रहा था कि कोई और आए और फिर से वो अपनी ट्रिक आजमाए किसी और के ऊपर. Then after some time he heard little footsteps on the path and looked up. It was Mr. Duck. He walked along with his chest held high and his feet made a slip-slap sound on the path. Mr. Duck had a bag with his lunch in it by his side, and he stopped when he saw Anansi and asked him how he was. Anansi put on a sad expression on his face as he wanted to pretend that he's sad. एनंसी ने अपसेट सा फेस बनाया कि मिस्टर डक से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मेरे लिए ये काउंट कर देंगे, मैं ये काउंट नहीं कर पा रहा. एंड मिस्टर डक रिप्लाइड दैट इट इज़ वेरी सिंपल फॉर मी. ही स्टार्टेड काउंटिंग 1, then it's 2, 3, 4, and 5. Mr. Duck disappeared instantly when he said 5. And Anansi ate up his lunch. अब आप ये सोच रहे होंगे कि एनंसी की फैमिली कैसे सर्वाइव कर रही होगी. क्या एनंसी ने उनके बारे में कुछ सोचा था? वो ऐसा नहीं करता था बिकॉज ही वॉज़ वेरी सेल्फिश. उसे जो भी फूड आइटम लोगों को बेवकूफ़ बना के मिल रहा था वो सब खुद खा लेता था एंड अपने घर वालों के बारे में नहीं सोचता था. After Mr. Duck, next who came along on her way to the market to buy some tasty treats was Miss Frog, but she didn't stop when Anansi called after her. Anansi said, "Hey, please help me count my plants." Miss Frog laughed and replied, "No way, count them by yourself," and she hopped away. Miss Frog ने Anansi की हेल्प करने से मना कर दिया and she went away. मिस फ्रॉग के हेल्प ना करने से अनंसी को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि अनंसी को ये बात पता थी कि अभी तो उसे बहुत चांसेस मिलेंगे जिन पे वो अपनी ये ट्रिक आजमा सके. एंड वो यही इमेजिन कर रहा था कि अभी तो उसे और भी ज़्यादा डिलीशियस फूड मिलेगा. बट उसने अपनी फैमिली के बारे में एक बार भी नहीं सोचा. जो भी मिला सब खा लिया एंड दूसरे दिन फिर उसी जगह आ गया दूसरे लोगों के साथ ये ट्रिक करने के लिए. Anansi was resting there and after some time a scurrying sound pulled Anansi out of his daydream. It was Mrs. Shrew and she had a huge load of freshly made pies that she was hoping to sell. The load was on her back and it was 3 times her size and her face was red from the effort she was making. Anansi called Mrs. Shrew and said, "How nice to see you. Sit a while and rest. I need your help to count my plants." Anansi wanted to trick her and to eat all the pies. That's why she wanted Mrs. Shrew to sit and take rest. But Mrs. Shrew was not a fool. She was very intelligent and clever, and she could see Anansi's eyes glisten as he looked at the pies. यानी मिसेस श्रू समझ गई थी कि एनंसी उनके सारे पाइस खाना चाहता है इसलिए उनसे हेल्प मांग रहा है. सो शी पुट डाउन हर लोड एंड सेड, "हाउ कैन आई हेल्प?" Anansi lied that I can't count my yams. Can you count them for me? Mrs. Shrew smiled and agreed. She walked to the nearest mound and stood on it. She pointed the mound that was furthest away from her. यानी मिसेस श्रू ने ये करा कि जो माउंट उनके सबसे ज़्यादा करीब था वो उसके ऊपर जाके खड़ी हो गई एंड जो माउंट उनसे सबसे ज़्यादा दूर था वहाँ से उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी. 1, 2, 3, 4 एंड 4 के बाद जिस माउंट पे वो खड़ी थी उसके लिए उन्होंने नंबर 5 यूज़ नहीं करा. उन्होंने कहा दिस वन.
Anansi wanted her to say all the numbers again. Anansi, again she shouted, 1, 2, 3, 4, and this one that I'm sitting on. She spoke slowly and clearly. Anansi became angry because Mrs. Shrew wasn't saying 5. एनंसी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने स्माइल करते हुए मिसेस शू से बोला कि प्लीज़ आप सब नंबर्स प्रॉपरली काउंट करें. अगेन मिसेस शू स्माइल स्वीटली एंड काउंटेड स्लोली, 1, 2, 3 एंड दिस वन हेयर. शी वॉज पॉइंटिंग टू द माउंट बीनीथ हर फीट. थर्ड टाइम जब उन्होंने फिर से 5 कहे बिना काउंटिंग करी तो एनंसी को इतना गुस्सा आया कि उसने खुद ही काउंट करके बताया कि ऐसे काउंट करो, 1, 2, 3, 4 एंड 5. शाउट करते हुए एनंसी ने जब 5 कहा तो एनंसी गायब हो गया. ही डिसअपियर्ड इंस्टेंटली इन अ बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क्स. Then Mrs. Shrew picked up her load and set off to the market to sell all the pies, as she wanted to buy mouth-watering delicacies for her family. Delicacies means rare food. Okay, students, as you can see that the moral of the story is very simple. As you sow, so shall you reap. इफ़ यू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स, अगर आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो तो वो प्रॉब्लम्स और वो ट्रबल आपकी अपनी लाइफ में भी आ सकती हैं. सो यू शुड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अदर्स टू सॉल्व योर्स. यानी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको दूसरों के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करनी चाहिए. एज यू सो सो शैल यू रीप. यानी जैसा आप करोगे वैसा ही आप भरोगे. दैट्स ऑल. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर एंड मोरल एज वेल. Thank you so much.